In the last class, we were discussing about system of linear equations. We have organized them in matrix format. We have solved them on the basis of row transformations. We did studied inverse of a matrix, and we did checked that there are different ways to calculate inverse of a matrix. This can be done by row transformation. This can be done by calculating the adjoint of a matrix. We are having a formula for that. Okay, where determinant play an important role. Okay, so I have many more things to say about these concept of vectors and matrices. Okay, so as you can see that vectors in computer science represents array of numbers, while in case of physics they represents magnitude and the direction. Okay, and we represent data, especially in case of data science, we represent data in a form of array of numbers only. And here is what you are seeing in xy axis. You can see we have represented three vectors in xy. Okay, and the points for these vectors are x1 y1, x2 y2, and x3 y3. Okay, so vectors keeps importance in your all domain, whether in science also, whether in maths also, physics also, everywhere. All right, so this is your data set. All right, in which we are having the features s1 and 2. We have put the values as x1 y1, x2 y2, x3 y3 here. Okay, now with the help of vectors we are representing them. Okay, that x1 y1 is here, x2 y2 is here, x3 y3 is here. Okay, so if we are having a huge data set of n numbers of features, n dimensional data. Okay, so vectors can be used to define them. A vector of n elements can be created over n dimensional vector. Okay, with one dimension for each element, where one dimension for each element. Okay, so we are having n elements, n dimensions. Okay, so here are two features available with you, feature 1 and feature 2. So you can represent them in two dimensions. Two dimensions are there, no? Two feature means two dimension. Okay, so that's what they are saying. A vector of n elements is an n dimensional vector with one dimension for each element. Okay, and here we are representing the two dimensional data and their values are being located accordingly. So this is how our data set is present. All right. So linear algebra and vectors in linear algebra helps us in understanding how to represent a data, how many dimensions are there. Okay, and vectors do not just the only way to represent data, they help in representing model also, machine learning models also, deep learning models also. They help us in representing many types of machine learning models represent their learning as in the form of vectors only. And all types of neural networks do this same task, all neural network also perform. Okay, so vectors are not only ki sir humne we represented the data only, that's it. No, we can represent models also with the help of vectors. Okay, so it's a very important concept. It can learn dense representation of the data, and these representations are essentially categorized into new given data. Okay, that means so obviously when you are going to
create a neural network, and there you are having different layers, and you are having neurons and the weight and the bias, and there are many things happening beside it. Okay, and all the computations are in a form of this matrices and vector format only. Okay, so that's what they are saying, that okay, while interpreting a models, obviously vectorization and this matrices keeps importance, and whatever the algorithms, new architectures which we are developing, they are based upon these concepts only. So just recently we did your fine tuning of large language model. There we use a concept of quantization, and quantization वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही है इंटरनली डेटा का, उसको भी हमने और लाइट करा। ओके, मॉडल वेट्स को और जो है वी रिड्यूस इट, कि सर दिस इज अ हैवी मॉडल एंड देयर इज सम अप्रोच नीड्स टू बी डन टू रिड्यूस इट साइज। तो क्वांटाइजेशन करा था हमने बिट्स फॉर्मेट में। तो बिट्स फॉर्मेट में दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेक्टर फॉर्मेट, और मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही हुआ है अंदर कुछ ना कुछ। ओके, तो ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन पूरा आई ऑलरेडी टोल्ड, ये तो 30 to 40% क्राइटेरिया लीनियर अलजेब्रा का है पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस में। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। So again, these are the ways which we are going to represent the data. We have already seen in our previous classes. Okay, and we can have a linear combination of vectors also. We can add the vector, we can subtract the vectors, we can multiply, and we have seen the properties of vectors. Okay, fine. Then what next we are going to check here is span. What do you mean by a span? So a span, let me now share a complete screen. A span in linear algebra refers to set of all possible linear combination of given vectors. So if you are being given as n vectors, so I want to have linear combination of all, that is called as a span. Okay, so vectors are mathematical object represented in an array format. For example, this is a vector v1, v2, v3, these are the elements present in this form a vector. Now linear combination of vectors means a linear combination of vector v1, v2, v3 is an expression which is formed of cv1 plus cv2 plus c3 v3 and so on, where c1, c2 up to cn are the scalar coefficients. Okay, so span of a vectors is a set of vectors of all possible linear combinations, all possible linear combination. So if we are having a vectors v1, v2, v3, etc., etc., these are the vectors. I am going to combine all of them. Okay, and any set of possible combinations can be done over it. So that's why they are saying key c1 v1 c2 v2 plus so on up to cn vn, that is the combinations of the vectors, where c1 c2 c3 are the scalar quantities, v1 v2 v3 are the vector quantities. This is how we can represent a span. So span is the set of all the points that can reached by linear combinations of given vectors. सारे points तक मेरी approach होनी चाहिए. That is called as a span. So span helps in defining the space or subspace that these vectors are collectively represents. एक ऐसी जगह, I'm talking about a space. So ultimately I'm talking about a vector space. Okay, so I'm going to represent a vector space where all these vectors combined, and I am having a reach by the linear combination of all these vectors that I can visit any of the point. तो ये एक span कहलाता है. Okay, so understanding span is very much crucial in linear algebra, especially when dealing with concepts like vector spaces, bases, and the dimensions. Okay, and span provides insights to the range of vectors can be generated using original sets and determine whether the set of vectors is complete in certain case or not. So it has many more things to say. However, in general concept, we understood that we are going to combine all the vectors, okay, followed by the scalar quantity, and that represents a span. And the idea of the span is I should have a reach to each and every point by combining all these vectors. So that will be called as a vector space, and
I will represent it in a form of a span. Okay, so here the concept of span came, that is the linear combination. Okay, and that can help us in potentially reach given a set of vectors. Okay, it's just a points or the vectors combination only, that is called as a span. All right. So this concept also, which we haven't covered previously, so I did mention here. Okay. Now, linear transformations. So linear transformation is essentially a function in linear algebra which take an input x and produce an output y. Okay, so a vector is transformed into another. That is called as a linear transformation. All right. And transformations are very much important in vectors, matrices. Okay. And we have seen this concept of transformation in computer graphics also during engineering part, that we are having different kinds of transformations there. You can have a rotation, you can have a scaling, you can have shear. Okay, so there are many transformations which we can do over the matrices. So we are going to represent an information in a form of a matrix or a vector, and we can transform it accordingly. उसमें चेंजेस ला सकते हैं हम. तो x से y बना लेना, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन या की करने की. यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स. Okay, you are having a matrix. Yesterday only we have seen one matrix. Okay, that has been used for the transformation. Here is the matrix. ओके, और जो प्रोजेक्शन बोल रहा था एक जगह. ओके, दैट सेट कि या हियर इट इज, ये 0 1 0 1 करके उसने बोला कि इसी को इफ आई मल्टीप्लाई, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वाई. ये कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स की मैट्रिक्स है ये ट्रांसफॉर्म कर देगी. इट कैन ट्रांसफॉर्म एनी वेक्टर into y equal to x. This is a matrix. So transformation is something which is very much important. काफी applications हैं इसके transformations के. And definitely I need to transform my data into some another format in my ml and dl and data science algorithms में. I need to apply this thing, क्योंकि see एक ही आपके पास लॉजिक बचता है, वो क्या है? द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डेटा, क्योंकि डेटा है उसको हम मैथ तभी अप्लाई कर सकते हैं उस पर जब यू कैन रिप्रेजेंट इट इनटू फॉर्म ऑफ वेक्टर मैट्रिसेस. then only we can apply all the transformations over it. रो ट्रांसफॉर्मेशन करे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करे, इनवर्स निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो. all these things you can only do if you can represent data into these notations. All right, so it is something which is very much important. And yes, transformation we will be applying, we did apply this thing. ओके, मेट्राइसिस की बात करें तो 2D होता है वो, क्योंकि वेक्टर्स 1D होता है तो मेट्राइसिस 2D होता है. दिस इज द वे यू कैन, दिस इज अ वे ऑफ पैकिंग एन इंफॉर्मेशन. Okay, in general terms, way of picking information is said to be a matrix. Okay, and either we can say a representation of data into 2D array, that is also called as a matrix. जो हमारी in general definition थी, that's what we have studied. Okay, so now you are having rows and the columns there, and matrices are a compact way of storing the data. Okay, containing multiple features in a columns and huge number of training examples rows. Okay, so we do convert our data into data frame and we apply all the transformations over the data frame. Okay, तो मैट्रिक्स का ही फॉर्मेट हो गया. अब आई हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट अ डिटर्मिनेंट कि सर यू सॉल्व अ मैट्रिक्स वाया डिटर्मिनेंट एंड यू गॉट वन स्केलर वैल्यू. आपको मिलता है वो, क्या है उसका मीनिंग, क्या है? तो डिटरमिनेंट सॉल्यूशन वी हैव सीन in our previous classes. Everyone knows how to solve a determinant, but the point is what the result which we achieve from the determinant, उसका मतलब क्या होता है? What does it mean? So determinant of a matrix quantifies the factor by which the area changes, increases or decreases by a linear transformation specified by a matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली ये निकालेंगे ना, दैट क्वांटिफाई दैट मीन्स वो एक ऐसी वैल्यू आपको देगा by the help of which we can say either my area or volume etc for a particular figure increase हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, whether it increase or decrease. ओके, इफ अभी भी आपसे कोई ये पूछ लेता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, समवन आस्क्स यू, तो आप डेफिनेशन नहीं बता पाओगे. सॉल्व करना तो पता है सबको कि हाँ सर दो डंडे लगा दिए
और हमें पता है कि सर पहले इस एलिमेंट को लेना है एंड देन आई नीड टू डू दिस मल्टीप्लीकेशन, और ऐसा ऐसा करके सर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, हो तो क्या रहा है उसमें, ये तो ठीक है ना, वो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गिविंग टू यू. So determinant of a matrix quantifies the factor by which the area or volume जो भी I told, okay, that changes, यानी either it is increasing or it is decreasing, whatever, okay, by a linear transformation specified by a matrix. ये determinant बताता है. तो यदि determinant जीरो है, that means if the transformation squishes the vectors into a line or a point or a region with no volume, यानी कि डिटरमिनेंट कमिंग टू बी जीरो, आई डोंट हैव एनी एरिया और एनी वॉल्यूम, एक पॉइंट पे आके उसने कंसंट्रेट कर दिया सब कुछ उठा के, ओके, आई डोंट हैव एनी एरिया नाइदर आई एम हैविंग वॉल्यूम, डिटरमिनेंट इज जीरो, यानी कोई स्पेस ऑक्यूपाई हुआ ही नहीं. इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, यदि डिटरमिनेंट नेगेटिव आता है, सो इफ स्पेस और ओरिएंटेशन इज फ्लिप्ड, पलट गया, वो फ्लिप हो गया. So if you are getting negative values for the determinant, there's a flip in the space, and positive आ जाता है, so the transformation cannot squeeze vectors into one line or a point or lower dimension compared to the input space. And obviously, positive determinant will show you area or a volume. That is not limited to a point or a line or something region with no volume. ऐसा नहीं होगा. Point का मतलब ही होता है कोई volume नहीं है. ठीक है. और यदि आपके पास पॉजिटिव डिटर्मिनेंट है, दैट मींस यू आर हैविंग सम एरिया और वॉल्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा व्हिच यू हैव रिप्रेजेंटेड इन अ मैट्रिक्स. तो क्वांटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वैल्यू इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट. सॉल्व करना मुझे नहीं सिखाना, आपको आता है, द मीनिंग मुझे बताना था. ऑलराइट, सो व्हाट इज अ बिसाइड स्टोरी ऑफ अ डिटर्मिनेंट, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर. ओके, सो डिटर्मिनेंट का भी मेजर रोल है. All right, we did applied. So matrix है तो solve तो करना पड़ेगा ना. We are using determinant there. Okay. So ये हो गया, determinant जीरो है तो एरिया वॉल्यूम भी जो है वो जीरो है, एक पॉइंट ही शो हो रहा है वहां पे. ठीक है. Inverse of a matrix. Yesterday we did perform the inverse. Okay, that means when a matrix A operated by its inverse, एक तो ये है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इट शुड बी नॉन सिंगुलर, और सेकंड ये है कि मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स गिव यू शुड गिव रिजल्ट एज आइडेंटिटी, ये मिलना चाहिए आपको. ओके, सो देन वी आर सेइंग इट्स इन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑलराइट, ये होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, तो in basic way we did performed the inverse. Okay, all the ways by which you can find the inverse of a matrix we did yesterday. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पर काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था. ओके, in the previous lecture, that how to calculate the rank of a matrix, so we did checked about the number of rows and the columns, they should have equal in number होना चाहिए. ओके, या वो इक्वल क्या बोल रहे हैं, विच इज बीन लेसर, वही आपकी रैंक को बताएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू सॉल्व इट, जो है नॉन जीरो रोज कितनी होती है, पहले तो ये चेक करो विच इज मिनिमम, एंड देन यू नीड टू चेक विच इज बीन नॉन जीरो. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में वी हैव अ गुड डिस्कशन in our previous classes. Okay, so that's also been done from our side. All right. Null spaces means ax equal to zero. That means set of vectors that land on a origin or null space. ये null space का मतलब ax equal to v where the value of v is equal to zero. That's said to be null space. That means set of vectors that are landing on the origin. Zero vectors. Zero vectors. ये आपका null spaces कहलाता है. This is a zero vector. तो origin को represent कर रहे हो, they are called as a null spaces. Okay, fine. Row and column spaces. Okay, so column space is a span of the column of our matrix. Fine. ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है. Dot product and cross product also we did seen in our previous classes. Okay, a vector dot b vector equal to ab cos theta, and by the help of this only we studied the projection. In the last class I talked about the projection also. Okay, here it is.
This is called as a projection. If we are having a vector dot b vector, it can be written as a b cos theta, and a cos theta, okay, is said to be a projection on b. B पर ये projection आ गया a का. This is said to be a projection. So yesterday someone asked me the question, sir, projection sir एक बार फिर से kindly repeat it. So this is the projection, okay, of, और component है ये एक तरफ से. The component of A on B is said to be a projection. Okay, तो ऑब्वियसली ना प्रोजेक्ट करना, अब देखिए ये है आपका, okay, fine. So this is a cos theta, you know, and this is a sin theta. So along B, this is a cos theta component. Okay, a cos theta component. So I'm saying that, okay, this is the projection of A on B. Okay, so projection of A on B, that is AB upon A mod of A mod of B. अब A को मैं I'm going to take it to that side. So you are going to get the result as this thing. A dot B upon B is equal to A cos theta according to this formula. So ये projection कहलाता. Alright, so यहाँ पर dot product and the projection उसके बारे में बात कही गई है. Okay, fine. Okay, cross product में, in case of cross product you are going to get the, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में यू आर गोइंग टू गेट अ स्केलर वैल्यू, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक मैट्रिक्स मिलता है. Okay, so that represents like an area of a parallelogram or any of the polynomial. Okay, something like this. So that is a cross product. Okay, we have seen cross product also in our previous class. Okay, so dot product and the cross product, inner product, outer product. Okay, we have seen in our previous classes. Okay, so फाइन क्रॉस प्रोडक्ट, क्रेमर्स रूल, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो वी आर नॉट focusing upon such things which are used in just our engineering. We are focusing upon those topics which will help us in understanding the concept of vectors and the matrices. Okay, तो ये जो क्रेमर्स रूल है ये हमने अपनी इंजीनियरिंग में काफी अप्लाई करा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. Okay, however, you know now how to solve a system of linear equation via row transformation. So one step I already told you, one way, one approach. Okay, eigenvalue and eigenvector, I already explained you. We did numerical also on eigenvalue and eigenvector, and this is a way you are going to represent a v equal to lambda v. V is an eigenvector, lambda is an eigenvalue, and obviously it is having a great importance. We are going to use this thing in our algorithms. Okay, so eigenvalue and eigen vectors, this thing. However, there are few more concepts which can be studied. Okay, and then we are having the algorithms where we can use this eigenvalue and eigenvectors, okay, as one of the application. Fine. So let's talk about an algorithm where we are going to use them. Fine. Principal component analysis, PCA. Now listen to me carefully. PCA. So in linear algebra, we studied about vectors, we studied about matrices, we studied about determinants. The point which we studied and understood that these are used in representing data. Okay, data, and obviously we are having multidimensional data, ND data. So as much as dimensions are present in a data, that will be your the number of features or number of columns. So this is your data set. Okay, this is your data set. These are the features in it, or either I would say these are the dimension in it. x1, x2, x3, x4, x5, s6, x7. These are the number of dimensions present in the data, और इनकी वैल्यू है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब just recently you studied, sir, if I am having two features, so I can represent them in 2D. टू फीचर्स को 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 3 फीचर्स हैं, वन मोर डायमेंशन ऐड कर दिया यहाँ. अच्छा, एक बात है, डायमेंशन तो ऐड कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है. ये जो
आपके पास यू आर अवेलेबल विद दिस डेटा सेट, यू आर अवेलेबल विद दिस डेटा सेट, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे सर? ओके, तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चेक करा था. दिस इज द वे यू कैन राइट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट. x1, x2, x3, x4, x5, s6, x7 मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसा लिखेंगे. और जो भी एंट्रीज हैं यहाँ पर, वॉट एवर बी द एंट्रीज प्रेजेंट हियर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेक्टर फॉर्मेट. ईच एंड एवरी 1D वेक्टर्स में आएंगी सारी एंट्रीज. ओके, ये सारी 1D वेक्टर्स में आ जाएंगी. ओके, सो आई एम हैविंग राइट नाउ 7 डायमेंशनल डेटा, 7D. तो अभी तो 3 बनाया मैंने, आई मेड हियर 3D बनाया है मैंने. आई कैन हैव मोर परपेंडिकुलर्स हियर, एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर. ओके, सो ये हो गया आपका 7D डेटा, 7 डायमेंशनल डेटा. एंड फॉर एवरी, बिकॉज यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट हियर, क्या बोला था वो? इन वेक्टर्स इट टोल्ड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय नोट्स फ्रॉम हियर, what it told related to the vectors, what it told कि आपको ये रिप्रेजेंट करना है. ओके, यू आर हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, n फीचर्स हैं आपके पास. ओके, यू आर हैविंग n फीचर्स. सो दीज n फीचर्स, आई एम हैविंग 7 फीचर्स राइट नाउ, 7 कॉलम्स हैं मेरे पास. So these 7 columns, 7 features can be represented as a points in an n-dimensional Cartesian coordinate system. तो 7 फीचर पे 7 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम बनेगा. तो 7 ही तो बनाया भाई मैंने यहाँ पर, क्या बनाया? 7 ही तो बनाया. यू कैन सी 7 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम है. और हर एक के लिए, दिस इज फॉर 1 डायमेंशन, टू थर्ड का है, ये फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है, सेवेंथ का है. ये एक हटा दो एडिशनल, चलो 8 ले लो. 8 डायमेंशनल डेटा हो गया, इसको 8 करो, एक्स 8 कर दो, उसको एक्स 8 करो. ठीक है, यहाँ भी एक्स 8 कर दो. ठीक है, तो 8 डायमेंशनल डेटा है मेरे पास अभी. ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स दिस वे. दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट इट. अभी क्या होता है, समझ में नहीं आता सर, n डायमेंशनल डेटा सर, रिप्रेजेंटेशन तो मैं 2D में कर रहा हूं इसको. भैया मैट्रिक्स तो 2D है, ऐसा बोला गया अभी. अब ये क्वेश्चन उठा, सर मैट्रिक्स तो ये 2D दिख रही है, दिस लुक्स लाइक अ 2D मैट्रिक्स, दिस लुक्स लाइक अ 2D मैट्रिक्स ना है. तो क्या सोच रहे हैं आप, इसको 2D नहीं बोल रहे, क्या बोलेंगे? इज इट अ 2D मैट्रिक्स और व्हाट? इज इट अ 2D मैट्रिक्स और व्हाट? सर लेकिन आप तो अभी बोले 8 डायमेंशनल डेटा है, 8 डायमेंशनल डेटा और रिप्रेजेंटिंग ऑन अ 2D मैट्रिक्स. सर ये कैसा खेल हो गया? हाउ दिस इज पॉसिबल सर? 8 डायमेंशनल डेटा के लिए सर मैं 2D मैट्रिक्स क्यों बना रहा हूं? सर ये तो टेंसर होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग टेंसर सर, बिकॉज सर 2D के लिए, फॉर 2D व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? 2 डायमेंशनल डेटा, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? हाउ वी कैन से कि ये 2D है. 2D में, 2D के लिए यू से कि सर हमारे पास मान के चलिए 2x2 है, 2 डायमेंशनल, जिसमें रोज एंड द कॉलम्स इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, रोज एंड द कॉलम्स वे है, ये 0 0 लोकेशन है, दिस इज 0 1th लोकेशन, दिस इज 1 0 लोकेशन, दिस इज 1 1 लोकेशन, ऐसा करके बेसिक 2D जो है मैट्रिक्स होनी. आई एम हैविंग 8 डायमेंशंस नाउ, 8 डायमेंशनल डेटा. और अभी आपने एक जगह डायग्राम देखा था. ओके, यू डिड स्टडीड अ डायग्राम टेंसर वाला. ओके, यू स्टडीड, आई विल शो यू द डायग्राम्स अगेन. ओके, दैट मींस द वे, हाँ ये रहा, ये गया. ये क्या है? ये 6D टेंसर है. ये व्हाट इज दिस? अ वे टू रिप्रेजेंट 6 डायमेंशनल डेटा. तो भाई मैट्रिक्स से तो यही होगा, 2D टेंसर है, ये तो मैट्रिक्स है. ज्यादा से ज्यादा 2 डायमेंशंस हो तो ये लगा लो, 3 डायमेंशंस हैं तो ये लगाएंगे, 3D टेंसर है. लेकिन इफ यू आर हैविंग 8 डायमेंशनल डेटा, तो 6D तो यहां खत्म हुआ, मुझे आई नीड टू ऐड 2 मोर डायमेंशंस टू इट, तो जाके 8D होगा. सो आप तो बना रहे हो मैट्रिक्स. सर ये क्या बनाया आपने? ये तो मैट्रिक्स बन रही है, तो मैट्रिक्स बन रही है. तो भाई ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही बनता है. दिस इज हाउ इट विल बी शोन. लेकिन ऊपर देखिए डायग्राम में जरा, ये
matrix within a matrix is said to be a tensor. Matrix within a matrix is said to be a tensor. ओके एंड वी आर हैविंग, अब इसको बहुत इंटरनली समझना है गहराई से. वी आर हैविंग नमपाई, नमपाई लाइब्रेरी फॉर पाइथन. नमपाई जो होती है एनडी अरे होती है, एन डायमेंशनल अरे. उसने कभी बोले नहीं वेक्टर मैट्रिक्स की तो बात ही नहीं, वो तो बोलता है एनडी अरे, एन डायमेंशनल अरे. और ये आपका ये जो डायग्राम विच आई क्रिएटेड फ्रॉम माई एंड, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. पाइथन इसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, हाउ इट्स गोइंग टू इंटरप्रेट, वो एन डायमेंशनल अरे इंटरप्रेट करेगा से एनडी अरे के फॉर्मेट में, कि एक 8 डायमेंशनल अरे है मेरे पास. ओके ऐसे ही इंटरप्रेट करता है उसको वो. ये वेक्टर्स तो 1D 2D और वो तो एनडी. हाँ, in ND either you can have one dimensional, either you can have a two dimensional. It observes everything in an n dimensional. नंपाई का काम ही यही है ना. यदि आप ऐसे, अब उसको ऐसे समझ में आएगा, देखो उसको ऐसा लगेगा, इफ यू हैव रिटन समथिंग इन दिस 1 2 3 तो बोलेगा ये 1D है. इफ यू हैव रिटन समथिंग लाइक दिस 1 2 3 वो बोलेगा ये 2D है. इसमें और डब्बा लगा दो जो बोलेगा 3D है. इसमें एक और लगा दो वो बोलेगा 4D है. अच्छा अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, स्टिल नॉट ओवर. इफ यू आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 ऐसा है आपके पास, और ये डबल डब्बे लगा दिए, बोलेगा ये है 2D, दिस इज 2D. ओके दिस इज 2D. ऑल राइट, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, 2 डायमेंशनल. अच्छा आप बोलो सर 1 2 3 इफ आई एम हैविंग 2 ब्रैकेट, सर ये भी 2D है, और सर ये भी 2D है, 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हो गया सर, ये भी 2D वो भी 2D, दोनों 2D नजर आ रहे हैं. हाउ हाउ दिस आर बिकम 2D, कैसे हो गया. तो भाई इसका आउटर 0th एक्सेस है. ओके अब इसके अंदर आएंगे तो ये 0th, देन ये 1th, देन ये सेकंड. सो 0th रो में 0th कॉलम, 1th कॉलम, सेकंड कॉलम, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है भाई. दिस इज 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वैल्यूज. ओके अब इसको मैट्रिक्स में बनाइए, रिप्रेजेंट दिस इन अ फॉर्म. तो बना तो है, ये मैट्रिक्स में ही बना है, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही बना है. ओके मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना है. यस एनीथिंग यू वांट टू से प्लीज आस्क. यस अनिल सर. Sir, could you repeat it once again, sir, please? Okay. Sir, actually, I am explaining here the data representation because everyone is having an issue related to the representation of the data, dimensions of the data. Okay, because we say that right now, I was telling n dimensional data. Okay, we are having in our data set, this is our data set, we are having x1 to xset. These are the dimensions, these are the features present in the data. Now, the point is, I am saying how to represent it. This is the way you are going to represent it. According to the definition of the vectors, they said you require for n dimensionals, you require n Cartesian axes. So this is the way you are going to represent it. Now the next question is how you are going to put this data in a form of a matrix. That's the question. How to put this thing in a matrix format. That's the question. Because you are having n dimensional data, 8D data. How to put it? Sir, 1D I know. Okay, 1D I know, sir. ऐसा कर दोगे या तो रो मेजर या कॉलम मेजर, वॉट एवर, ये 1D. 2D में आप बोल दोगे सर ये रहा 2D, दिस इज 2D, है ना. 1 2 3 4 ये 2D हो गया. ये आपका फीचर 1, दिस इज फीचर 2. नाउ द पॉइंट इज, इफ आई एम हैविंग मोर फीचर्स, so x1 x2 x3 x4, ओके तो क्या सेम नोटेशन फॉलो करूं मैं, ये वाला. शुड आई फॉलो द सेम नोटेशन टू रिप्रेजेंट देम. प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज आई थी. Okay, so shall I need to write like this 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये लिख दिया, ये बात खत्म है. Is it okay to represent a 4D data? These are the 4 features. Is it okay to represent a 4D data? लेकिन यदि मैं इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करूंगा तो आई विल बी सेइंग 0th रो 0th कॉलम, इसको बोलूंगा 0th रो 1th कॉलम, इसको बोलूंगा 0th रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, एंड दिस इज 0th रो थर्ड कॉलम. तो ये तो मैं 2D पे कर गया है, इसको तो मैं 2D पे रिप्रेजेंट कर दिया, 4D को 2D पे कर दिया, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लगाया ही नहीं. देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन सीन हियर.
आई एम हैविंग अ 4D डेटा एंड नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग इन अ 2D। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 4D डेटा को? 4D डेटा, 8D डेटा, एंड वी हैव सीन इन अ डायग्राम कि सर ऐसे होता है। 4D डेटा को रिप्रेजेंट करना तो सर वो ऐसे होना चाहिए। 4D टेंसर तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 4D टेंसर। और फाइव डायमेंशनल डेटा होगा तो वो ऐसे होगा, 6 डायमेंशनल ऐसे होगा। इन इन 7 डायमेंशनल में ये होगा कि आई नीड टू ऐड वन मोर थिंग, ये सिक्स डी टेंसर्स हैं, 7 और 8 में 2 more डायमेंशन उसमें ऐड करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो ये जब आप देखोगे प्रिंट करवाते हो इनकी वैल्यू, व्हेन यू प्रिंट देम तो वो क्या करता है, एक अरे बना देता है। आप देखिएगा ये इसमें, क्योंकि इसमें उलझ जाओगे तुम, बिल्कुल इसमें उलझ जाओगे सर। ये तो हम 6D तक तो हमारी हालत खराब हो गई सर, और 7D 8D कैसे बनाएंगे हम? इसको देखने का समझ भी नहीं आ रहा, 7 और 8 डायमेंशन कहाँ लगा दें हम, वेयर शुड वी पुट देम? सो वी विल बी, तो ये तो एक रफ टेम्पलेट बन गया, मतलब मेरे हिसाब से तो ये कि ये तो रफ डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया 2D के फॉर्मेट। नहीं, ये तो हो नहीं सकता भाई, रफ टेम्पलेट है। तो हाउ, यस 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 प्लीज से। Sir, say for an example, if we have 1,000 features, हाँ mean हाँ, तो the वही तो इशू हो जाएगा सर। 1000 फीचर्स के लिए क्या करोगे फिर? If you're having 1000 features, you should represent them in a 1000 Cartesian coordinate way. 1000 features को तो ऐसे ही, तो वो क्या करता है? Okay, how this ML and DL and how they are going to that's why the concept of NumPy came into the picture, ND array, n dimensional array के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है वो उनको। so, जितनी भी वैल्यूज हैं वो उनको एक अरे फॉर्मेट में, ये अरे फॉर्मेट में, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंटेड, ये करता है वो काम अरे फॉर्मेट में। ओके, एंड व्हाट इज अरे? व्हाट इज एन अरे? अभी हमने यहां पर कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, व्हाट इज एन अरे? एन अरे ऑफ नंबर्स में, दैट मीन्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एक नंबर्स की लिस्ट बना देता है वो पूरी, जितना भी हो आपके पास, हाउ many योर डायमेंशंस अवेलेबल, तो दैट विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस दैट्स एन अरे। सो 1D अरे है तो 1 लिस्ट, 2D अरे है तो 2 लिस्ट, 3D अरे तो 3 लिस्ट, एन डी है तो n लिस्ट, लिस्ट बना देता है वो उनकी, अरे ऑफ लिस्ट पूरा बना देगा वो। ये दैट्स द टास्क विच वी डू इन numpy, एंड दैट्स हाउ इट इंटरप्रेट द वैल्यू। ओके, बिकॉज ये तो हाइपोथेटिकल हो गया सर, ऐसे ही बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यू आर हैविंग n डायमेंशन, सो दिस इज द वे यू आर पुटिंग इट। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि 8 को 2D पर शो करने का कोई सेंस नहीं है। This is n dimensional, you are having 8 features in the data, so how you are going to put it here? That's the point. Yes, all right, now अब ये, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट IMP मार्क, आई एम मार्किंग IMP, इंपॉर्टेंट n डायमेंशनल अरे, ND अरे। सो अरे, as we do study, array is a sequence, array is a sequence of numbers, array is a sequence of numbers। तो you are having ND array, so you are having a sequence of n dimensional list। तो बोल रहा है कि लिस्ट के फॉर्मेट में, एक लिस्ट के फॉर्मेट में नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर दो तो n डायमेंशनल लिस्ट। ओके, ND लिस्ट 7 तो 8D, सो 8 लिस्ट बनेगी यहां पर, 8 लिस्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर ND अरे, 8 डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 लिस्ट बनेंगे। बाकी इतना हम वी अंडरस्टूड कि सर हर एक डायमेंशन, ईच एंड एवरी डायमेंशन, ईच एंड एवरी डायमेंशन, फीचर्स, फीचर्स जो भी हैं फीचर्स, दे रिक्वायर 1 डायमेंशन टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। दैट्स व्हाट दे डू। वो डेफिनेशन से समझे, नहीं आता, नहीं समझ में नहीं आता, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं समझ में आता है कि सर ये डेटा सेट था तो हाउ वी आर गोइंग टू पुट इट, उसको कैसे दिखाऊं मैं, शो कैसे कर दूं डेटा को? अरे भाई डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, मेट्राइसेस पढ़ चुके हैं, और हम तो टेंसर्स की बात करते हैं, टेंसर्स की बात करते हैं। ओके, तो ये वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। तो 8 डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करूं, हाउ, दैट्स अ क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट 8D डेटा, कैसे करूं मैं सर, कैसे दिखा दूं इसको? तो यदि आप इफ यू से सर 8D को 2D पे तो दिखाने का तरीका ये हो गया, यदि यू आर सेइंग 8D को 2D पे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो यार 8D को 2D पे कैसे दिखा दिया तुमने, हाउ?
ये क्वेश्चनेबल हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट हियर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, तो ये तो आप 2D से शो कर रहे हो। ये 8 डायमेंशनल डेटा को 2D से कैसे शो कर दिया तुमने? और जस्ट नाउ वी हैव सीन कि ये तो 6 डायमेंशनल डेटा, तो हमने देखा अभी ऐसा कुछ दिखता है सर, इट लुक्स लाइक दिस 6 डायमेंशन, तो 8 डायमेंशनल डेटा कैसा दिखेगा फिर? टू मोर फीचर्स, इसमें 2 more डायमेंशन ऐड करो तो जाके 8D दिखेगा वो। ओके, दैट मीन्स आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, द वे विच यू आर रिप्रेजेंटिंग, दैट्स जस्ट इन रफ रफ वे टू रिप्रेजेंट, जस्ट टू शो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी ऐसा है नहीं, बाकी ऐसा नहीं है। ओके, 8 डायमेंशन है तो वो एक एक वैल्यू विच इज प्रेजेंट हियर, एक एक वेक्टर बनाएगा वो, एक एक वैल्यू से एक एक वेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक वेक्टर बना, फिर देन 1 then 5 then 7 8, whatever be the values which are present in the data set, everyone is representing a list of arrays, और ऐसे इतने सारे जितने भी हैं अरे, वो एनडी अरे है, एनडी अरे, लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट विल कॉल्ड एज एन एनडी अरे। एनडी अरे बन जाएगा ये, उनकी पूरी लिस्ट बना देगा, छाप देगा ये। तो नंपाई का यही गेम है, नंपी लव। सो अगेन आई एम मेकिंग अ स्टार पॉइंट हियर, you have to go through, okay, nd array, and how n dimensional data is represented using matrices and numpy, how it's gonna do that। अभी मेरा कंसर्न तो कुछ और था, ये मैंने इतनी बातें कह दी, बट माय कंसर्न इज समथिंग डिफरेंट। आई नीड्स टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक्चुअली, और वो क्या है, किस लिए बात कर रहा हूं मैं। सी, द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। अच्छा, अब चाहे खेल क्यों हो गया ये सब, व्हाई आई डिड एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। देखिए, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग many features present in your data, many features present in your data, n features आपके पास हैं, all right, now not every feature, not every feature is gonna contribute, सारे फीचर काम के थोड़ी ना है, not every feature is gonna contribute in your model development, okay, only some features or specific features which are having good variance, high variance। वेरिएंस का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस? वेरिएंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका स्टैटिस्टिक्स में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, और आई वुड से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस। फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग अ फीचर, एक फीचर है आपके पास x, इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, इनका मीन निकालो, और इन सब पॉइंटों की मीन से दूरी, ये वेरिएंस कहलाता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मीन इज सेट टू बी वेरिएंस। तो ऐसे फीचर जिनका वेरिएंस हाई हो, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है मॉडल में, तो आई नीड टू पिक दोज फीचर्स, ठीक है। सेकेंडली, रिलेशनशिप विद द टारगेट, ओके, रिलेशनशिप विद द टारगेट, रिलेशनशिप विद टारगेट, आई नीड टू पिक दोज फीचर्स टारगेट से अच्छे रिलेटेड करें, और आपस में बिटवीन बिटवीन देमसेल्व्स वो लेस कोरिलेटेड और कोरिलेटेड और कोलिनियर हो, मतलब आपस में कोई बातचीत नहीं, बिटवीन देम नहीं होना चाहिए, टारगेट के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो आई शुड हैव अ गुड रिलेशन विद माय गोल। बाकी लोगों को मुझे उनकी बातें सुनना है, उनसे अच्छा व्यवहार रखना है, ठीक है, लेकिन उनके प्रति प्रेम भाव और ज्यादा उनमें वो नहीं करना मुझे, ठीक है। आई शुड हैव अ गुड टर्म्स, बट मेरा गोल मेरे सामने क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अपना गोल भूल जाओ अपनी रिश्तेदारी निभाने में या दोस्ती निभाने में। तो यही मॉडल, मतलब जो प्रैक्टिकल, समथिंग विच इज बीन इन अ प्रैक्टिकल लाइफ ना, दैट इज बीन एप्लीकेबल हियर। गोल शुड बी क्लियर। सो दोस फीचर्स विच आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द टारगेट, लीस्ट रिलेशन अमंग themselves, एंड शुड हैव अ हाई वेरिएंस, ऐसे फीचर मुझे रखना है फॉर मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल डेवलपमेंट। अब यू आर हैविंग दिस मच फीचर्स, बहुत सारे फीचर है आपके पास डेटा में, एंड not every feature is going to give you that, sir, they are been following these properties. Yes, ask the question if anyone is having, please say. Sir, I want to understand like how Yes, how? how
um, data feature, like we are getting to know which feature is important and which is not according Huh, to the yes, distance. there is one of the step which has been present in our ML algorithms, yeah, ML technique mein. Okay, that is feature selection and feature importance. Feature selection, feature importance we are having. Okay, so we are having the algorithms like decision tree, random forest, XGBoost. Okay, these are the algorithms. They are going to tell you which feature is important for us. They are having algorithms. We are having techniques, feature importance nikalne ki, that we will study ahead. Okay, we'll apply them. Okay. We will understand that how feature importance is calculated. ये आगे है अभी. Okay, so there is a way to calculate the feature importance. तो इसके Okay, and post that we will be implementing PCA हाँ हाँ. to अब एक बात है, एक चीज reduce. और है, एक वन मोर थिंग आई वांट टू से. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. अभी अभी कुछ बताया ही नहीं मैंने उसके बारे में अभी आपको. मैं आई जस्ट क्रिएटिंग अ फाउंडेशन. आई एम क्रिएटिंग अ वे. ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में क्या है? You are having multiple features present in your data, and we know that not every feature is important or relevant for us to use in our model development or the model training. All right, so we need to drop some of the features. We need to drop some of the features now. We need to drop, okay, ठीक है. And we need to perform feature selection. ओके, तो ये पीसीए जो है वही काम करेगा फीचर सिलेक्शन वाला. फीचर इंपॉर्टेंस के लिए मैंने आपको बता दिया डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट. तो फीचर सिलेक्शन, तो पीसीए जो है एक फीचर सिलेक्शन टेक्निक है आपकी. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दोज फीचर्स फ्रॉम इट विच आर हैविंग गुड, विच आर हैविंग गुड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मॉडल डेवलपमेंट, यानी कि जिनका वेरियंस जो है दैट्स हाई, हाई वेरियंस डेटा है. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दोज फीचर्स हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इज गुड एंड हुज वेरियंस इज हाई. ओके, ऐसे फीचर मुझे निकालना है. दैट्स द थीम ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए. अब हमने बोला we are having 10 features. Okay, not every feature is important. Let us suppose 5 feature are important, 5 we need to drop. How to decide? How to decide? Question number 1, how to decide that these features needs to be dropped and these features need to be accepted for our modeling? Second, I told principal component analysis, PCA. It is a technique to reduce the dimension. That's what I'm saying. Reduce means dropping some of the features with minimal loss of information. बड़ी बात है ये स्टार. क्यों? सी इफ यू ड्रॉप एनी फीचर फ्रॉम द डेटा ना, तो उसका मतलब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. इफ यू ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम द डेटा, एनी कॉलम फ्रॉम द डेटा, एनी फीचर, एनी डायमेंशन फ्रॉम द डेटा, दैट मीन्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्योंकि डेटा में तो वो था ना. हाँ, ये बात अलग है कि लेटर ऑन यू concluded over it that this feature is not important for me and I need to drop it. That's a case. But फिर भी डेटा में तो था, और किसी को भी ड्रॉप करना डेटा में से, दैट मीन्स अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज माय गोल? व्हाट इज माय गोल? कि सर ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आई कि सर नॉट एवरी फीचर वी आर गोइंग टू कीप. वी आर गोइंग टू ड्रॉप सम फीचर्स फ्रॉम द डेटा. कुछ को गिराएंगे हम, लेकिन ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करके गिराएं उन्हें, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करके ड्रॉप करो ताकि जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो उनके ड्रॉप होने के बाद वो लेस हो. ओके, आई नीड टू ड्रॉप देम, बट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी दैट मच. नहीं होना चाहिए, या कम से कम होनी चाहिए. दूसरी बात, ठीक है, तो सर अभी ये बात हमें समझ में आ रही है. वी आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा and we require to drop some of them, and while dropping, loss of information should be less. Okay, for example, if you create a data set also in academics, you are having an information related to the students.
Okay, in first semester, these are the marks. In second semester, these are the marks. Third, if you drop any of the semester information, obviously, यार, it's a loss of information. आपको एक loss तो हुआ ना. So I want to drop the features, लेकिन मुझे information भी कम लॉस हो, ऐसा ऐसा कुछ खेल करना है मुझे. आई नीड टू डू समथिंग. दूसरी बात, ये करना है. अब यदि मैं नहीं करता, पहले तो ऐसे चलें, सर यू आर अवेलेबल विद द 10 फीचर्स, और 10 की 10 से ही यदि मैं मॉडल को, इफ आई एम गोइंग टू ट्रेन माय मॉडल विद दीज 10 फीचर्स, विद दीज 10 फीचर, इन्हीं सबसे ट्रेन कर दो, तो सर कोई प्रॉब्लम है क्या? आप क्यों इतना ये टेंशन ले रहे हो इनको करने के लिए? वाई यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सर ड्रॉप कर दो और फिर ट्रेन करना? एंड वाई यू टेकिंग सो मच टेंशन हियर? Sir, we are available with 10 feature. We can train our model by 10 feature, sir. Why you are applying all these things कि drop करो और information कम loss होनी चाहिए and ये and all this? Why you are doing? One excuse I gave, that not every feature is relevant. Not every feature is having high variance. Not every feature is independent. There might be correlation between them. हो सकता है. तो भाई यदि ये लफड़ा है इनके साथ, दिस इज द प्रॉब्लम बिटवीन देम, तो यदि इफ आई एम गोइंग टू ट्रेन माय मॉडल विद कोरिलेटेड फीचर्स, तो भाई वो तो ओवरफिटिंग दे देंगे मुझे. दे आर गोइंग टू गिव मी ओवरफिटेड रिजल्ट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग in previous classes, when I am going to train my model with the correlated features which are dependent upon each other, तो एक के कारण दूसरा भी पकड़ाई में आ जाएगा. कोरिलेटेड कोलिनियर होगा, so one is increasing, another is increasing. So there is a correspondence between them. So if model is going to work on any of the feature, any one feature, it's going to pick up another feature also without any efforts. That will be easy for a model to pick up this thing. वो समझ जाएगा. और मुझे मॉडल को मेमोराइज थोड़ी ना करवाना है, उसको ट्रेन करना है, यानी उसको नॉलेज डिस्कवर करना है. मेमोरी थोड़ी ना करना है कि एक एक्स को, इफ इट लर्न्स एक्स, इट विल बी नोइंग वाई ऑल्सो, ऐसा थोड़ी ना करवाना है. ऑल दीज फीचर्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या डिपेंडेंस भी हो तो बिल्कुल मिनिमम हो, मिनिमम ऑफ द मिनिमम हो. All right. So because of these reasons, इन्हीं के कारण, इन्हीं issues के कारण, I'm going to drop some of the features which I don't feel that they are important for me in analysis. In modeling actually. Analysis तो कर लेंगे. Modeling में नहीं करना है मुझे. Model में उनको put up नहीं करना. Okay. So अभी these are the reasons why we are going to drop the features. Okay. And now we face एन इशू दैट ड्रॉप तो करोगे, लेकिन ड्रॉप करने से इंफॉर्मेशन का लॉस है. कैसे? लेट्स सी. नाउ अंडरस्टैंड वायर डायग्राम. देखिए, लेट अस सपोज यू आर हैविंग टू फीचर्स, f1 एंड f2, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फीचर्स लुक लाइक यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. कि सर f1 एंड f2 का, इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट द डेटा पॉइंट्स, सो दे आर लुकिंग लाइक दिस. अब आप देखोगे कि जो द f1 का वेरिएंस इतना है, f2 का वेरिएंस इतना है, दैट मींस बोथ आर हैविंग हाई वेरिएंस. एंड बोथ आर हैविंग हाई वेरिएंस. एक चीज और है, दिस इज, इट्स शोइंग अ लीनियर रिलेशनशिप आल्सो. इट्स शोइंग लीनियर रिलेशनशिप. देखेंगे आप f1 के इंक्रीज पर f2 इंक्रीज हो रहा है. दे आर हैविंग लीनियर रिलेशनशिप. नाउ इन दिस केस, इफ आई ड्रॉप एनी ऑफ देम, आइदर आई कैन ड्रॉप f1, आइदर आई कैन ड्रॉप f2. तो इशू ये हो गया, ड्रॉप तो कर दोगे, बट आप देखें वेरिएंस हाई था इनका, लगभग लगभग बोथ आर हैविंग इक्वल वेरिएंस. यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन 50% था, तो इसका भी 50% कंट्रीब्यूशन है. सो ड्रॉपिंग दिस f1 और f2 is going to have a loss of 50% of information from the data. ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया. This is an issue for us. Okay, so that's what they are saying. Imagine that we are having a data set with two features, f1 and f2. We want to reduce the dimensions to 1D, है ना? 2D, we want to convert 2D to 1D. That's what we have to do. अब we can delete any of the feature, either of the feature from the data, but this will result in information loss, because still they are having high variance. We are having 50% information loss. यदि किसी को भी निपटाया तो अपन ने.
अब इसी समस्या को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज इफ वी सी दैट यदि डेटा according to these dimensions, if it is distributed, then obviously I will be having an issue. I will be having a lot of loss of information. So we came up with a technique that is called as principal component analysis, PCA, principal component analysis, which is called as dimensionality reduction technique. What is dimension? Dimension means number of features. अभी पढ़ तो लिया dimension के बारे में, पढ़ा तो सही. Dimension is feature, column, whatever you want to say, you can. And it's a technique to reduce the dimension. Okay, to reduce a dimension. अच्छा, कोई बात नहीं. Let's check another case. One more case I am available here. Let us suppose you are having again two feature, f1 and f2, and this is how they are having a distribution of data. So you can see f2 is having high variance, f1 is having low variance, low distribution. स्टिल भाई लो तो है, लेकिन अभी भी मान के चलो 10 to 15% तो है, still 10 to 15% है. Still if I drop f1 from here, if I drop, I know that I can take a decision, I can drop f1 from here, but still dropping f1 is going to have a loss of 10 to 15% information. फिर इशू आ गया, सर 10 to 15 भी परसेंट बहुत होता है सर, यदि 3 to 4% हो तो सर चलेगा सर, बट 10 to 15 अभी भी सर इशू है. Okay, this is 10 to 15 is still an information, so dropping is not a convenient way. क्या करें सर, what can be done? Okay, तो आगे बढ़ते हैं. Now, is there any way to do the same thing which we tried above, that means dropping of the features? Is there any way? Okay, so now what we can do, हमने एक्सिस को रोटेट करा और ऐसा बना दिया. I rotated my axis, which was initially looking like this. Now I rotated my axis. Okay, so my data which was present here, let us suppose this is f1, and this is f2, my data which has been shown here. I rotated my axis. That means I made some axis from my end. ऐसा करके I created an axis. एक ही एक्सिस बना लिया मैंने, आई क्रिएटेड, एंड आई विल बी प्रोजेक्टिंग दिस डेटा ओवर दिस एक्सिस. इस पर प्रोजेक्ट कर दूंगा मैं. आई विल बी प्रोजेक्टिंग माई डेटा ओवर दिस एक्सिस. प्रोजेक्शन करा इस पे. जब प्रोजेक्शन कर दोगे तो इनिशियली द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर बीइंग हायर ओवर द एक्चुअल एक्सिस, तो प्रोजेक्टेड एक्सिस पर उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे. ओके, उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास. ओके, सो ये इस तरीके से शो हो रहा है. दिस इज योर न्यू f1 एंड दिस इज योर न्यू f2. when I going to rotate, so I need to put every points over the new axis, so I will be having the components of them. All right, तो अच्छा कंपोनेंट ये वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी है. दिस इज द सेम थिंग विच यू हैव स्टडीड. क्या सर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज a vector, this is angle theta, so this is a cos theta and this is a sin theta. So what is a cos theta and a sin theta? These are the two components along x axis and y axis. And और ये बात भी 200% सही है कि सर जो वैल्यू a की थी इसमें, अब ये a cos theta हो गई, यानी कि ऑब्वियसली रिड्यूस हो गई है कंपोनेंट. बिकॉज अब कैसे रिड्यूस हो गई है? if angle is 45 degree for example, so it will be a upon sine 45 या cos 45. So what is cos 45? 1 by root 2. So a by root 2, तो root 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, डिवीजन हो रहा है. तो कंपोनेंट के कारण, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट, द इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड. ऑल राइट, सो we created new features, new f1 and new f2, or we
कैसे आ गए? हाउ दिस न्यू फीचर्स आर क्रिएटेड? दीज न्यू फीचर्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ये दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बना लिए मैंने, या टू एक्सेस बना ली मैंने अलग अलग से. ये आपके ये आपकी यू कैन से एक्स डैश ले लो, या इसको वाई डैश ले लो, एक्स डैश वाई डैश, ऐसे बना ली. ओके, तो बट सर, हाँ, यस यस. so I mean we can say कि because we are using a cos theta and a sin theta as a new dimension, तो जो वेरिएशन हम ऊपर बोल रहे थे कि वो 20% के अराउंड हाँ है, हाँ नाउ हाँ दैट हाँ हाँ, रिड्यूस और टू फाइव रिड्यूस हो टू टेन जाएगा. यस परसेंट यस, और रिड्यूस हो जाएगा. मैं वही वही चाह रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई वांट, कि दैट 10% और 15% है ना, उसको जैसे तैसे करके मैं 3 या 4% पर लेकर आ जाऊं, तो मेरे पास लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो और कम हो जाएगा. ओके. राइट सर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास सब है, लेकिन हाँ हमने हाँ उसको बस डिफरेंट प्रेजेंटेशन में हाँ डाल दिया. हाँ, डिफरेंट प्रेजेंटेशन में डाला. इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास सब, बट आई नीड टू पुट इट ऑन डिफरेंट प्रेजेंटेशन. दैट्स व्हाट आई वांट. ओके, तो मेरा काम की काम हो जाएगा, और हाँ, इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लॉस भी नहीं होगा. लूज नहीं होगी. ओके, तो अच्छा, ये स्टिल 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 द पिक्चर विच आई हैव शोन टू यू, ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बट विदाउट मैथ्स, विदाउट एनी मैथमेटिक्स, यू कांट प्रोजेक्ट द डेटा इन दिस वे. और जो पीसीए है उसमें ये पूरी मैथ से लगी हुई है. एंड द कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन द लीनियर अलजेब्रा, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ओके, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव लर्न देयर. सर वो एक कॉस्ट थीटा से समझ में आया ना, मैं भी वही सोची थी कि इसमें भी तो वेरिएशन 20% ही लग रहा है, बट हम्म. द मोमेंट यू सो ना कि ये एक कॉस्ट थीटा हो गया, देन इट हाँ मेक हाँ सेंस कि हाँ हाँ उसने हाँ, उसका वेरिएशन इतना वेरिएशन रिड्यूस कर दिया. रिड्यूस कर दिया. ओके, अब देखिए, राइट सर. ये हियर इट इज, हियर इट इज. फॉर एग्जांपल, दे हैव क्रिएटेड अ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. जो जो डेटा आपको इनिशियली F1 और F2 पर दे वर शोइंग, F1 एंड F2 पर शो कर रहा था, अब वो प्रिंसिपल कंपोनेंट पे शो कर रहा है. दीज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स PC1 एंड द PC2. इस तरीके से वी कैन मेक द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स PC1 एंड द PC2. सो आफ्टर रोटेशन ऑफ द एक्सिस, we made two new features. Here the spread of new F2 is less and we can skip this feature. So we have created new F. So what are the principal components? What algorithm we are studying? PCA, principal component analysis. That means we are creating new axis, and we are projecting data over these new axes. Why we are projecting this data over new axis? Because the loss of information which we are getting higher in original axis, I want to preserve it. वो नहीं चाहता मैं. That's why I'm creating principal components. ये बना रहा हूं मैं to capture the largest variance in the data. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेटा का जितना ज्यादा वेरिएंस, as much as the data is distributed, high variance, high contribution in the model development. तो वेरिएंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का. That's why now we studied in data science ये linear algebra, statistics. In statistics we are going to learn about the variance and the standard deviation, all these things, mean, median, mode, all these things were present in the statistics. So good variance is important for us to understand. अब ठीक है, ऐसा कुछ अभी लगा कि सर वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू dimensions. Okay, that means new axis, and we are going to project our data over those dimensions. ओके, या इसी पर ही हमने वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना दिए. अभी तो ये लग रहा है कि सर आपने इसी पे बना दिए प्रिंसिपल कंपोनेंट. हियर ओनली यू हैव क्रिएटेड द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. हियर ओनली यू हैव क्रिएटेड द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ओके, फाइन. सो हाउ दिस टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म, what are the steps which are involved in the performance of such axis, we are going to study now again. Pay attention. Okay, I'm going to follow up the steps for PCA. Remember, we are having n features. N feature bole to n columns, n dimensions in the data. So we will be having n principal components for them. जितने dimension है उतने component बन जाएंगे आपके. As many as dimensions you are available in the data, as many as principal components you can create बनेंगे. And but we will keep only those which will preserve more information.
रखना उन्हीं को ही है जिस पे ज्यादा मिल रही है। n डायमेंशनल डेटा पर n प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, but keep only those which are giving us the high information high variance, बाकियों को निपटा दो। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स which are involved in the PCA? क्या होगा? तो ये देखिए, these are the steps which are used in the principal component analysis. Step number 1, you need to standardize your data. Standardization of the data, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और कहीं बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटा. That means you need to convert data into standard format, like I can represent all the features in one scale, all features in one scale. This I want to do. यदि ऐसा हो जाए उसके बाद ही कोई काम आप करिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा. व्हाई? नाउ let me talk about the step number 1, why it is important. Standardization, data standardization. Now, अभी क्या है? See, this is your data set. This is your data set. Why data standardization is important, and we are already available with standard scalar as one of the library. Standard scalar, min max scalar, robust scalar, various scaling techniques we are available in our Python for pre-processing of the data. Scaling techniques हैं. Okay, तो step number 1 is standardization. Standard बनाओ data को. What's the reason? For example, you are having feature x1, x2, x3, x4. The values which are present in x1 are 1, 2, 3, 2, 3, 5. The values which are present in x2 are 1000, 2000, 3000, 10,000 and so on. अब इशू ये है कि सर देखिए, the values which are present in x1 are small and the value which are present in x2 are bigger. So obviously x2 is having higher variance, x2 is having high variance. Okay, अब मान के चलिए in any case x1 is still important for us in our model development, लेकिन क्यों its variance is less is compared to other features, तो भाई ये वाला फीचर जो है ना सप्रेस हो जाएगा. This feature will be suppressed by the feature which is having high variance. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये ताकतवर है और जो ताकतवर है वो कमजोरों को दबाएगा. होता ही है, प्रैक्टिकल फैक्ट है. तो ताकतवर का काम ही है कमजोरों को दबाना, ये करेगा ये. x2 will suppress x1. अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन सर, द स्टैंडर्डाइजेशन में आई नीड टू scale all the features in same way. That's what I want. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये सप्रेस हो जाए, x1 is gonna suppress by x2. I don't want this thing. Yes, Kunal, ask the question. Yes, please ask the question. Any doubt, anyone, please let me know. So issue is this thing only. If any of the feature is having high variance and other feature is having low variance, okay, so it's going to dominate. इसको कहते हैं dominance of one feature on another. This is called the dominance. Or I want to remove this dominance. That's why I'm going to standardize my data. Okay. Sir, experience versus salary. हाँ, कह सकते हैं. We can have experience versus Nice, sir. salary. Yes. Yes, Baban sir, Kunal, if you are having any doubt, please ask the question. The variance or this is the sheer magnitude? हाँ. Like variance would even if the values are very different about two features, variance can be same. But
scale will be different, right? So I don't think it's variance. It is a scale or it's variance. See, So scaling, can you sir, clarify? sir, scaling. That's what I'm. Okay, okay. Let me tell you about the fact related to the scaling. See, standardization is scaling. I want to scale my data. If the different features in the data set are in the different scales, in a different scales, so the point is here. Up, the point is here. X1 and X2. These are having different scale. For example, for example, one is in a meter, one is in kg, है ना? तो Okay. meter and kgrs are having different scales. Okay, so it's a magnitude of हाँ like हाँ it हाँ हाँ. doesn't matter whether what's not the variance. Okay, thank you, thank you. Okay, so they are having different scales here. Yes, ask the question. सर जैसे x1 की वैल्यूज 1 2 3 में है हम्म. और x3 x4 भी उसी के पास है वैल्यूज, हाँ हाँ तो हाँ है. x2 को तो आउटलायर भी समझ सकते हैं ना नहीं नहीं, सर आउटलायर मॉडल। नहीं, नहीं नहीं, आउटलायर नहीं, आउटलायर का कॉन्सेप्ट अलग है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटलायर इज डिफरेंट. Okay, outlier means those points which are wrong or faultly entered into your data. Okay, wrong entries assumption है उनका जो मेरे distribution में uh, which are coming or which are behaving as anonymous, that are said to be outlier. So this complete feature is not an outlier. That complete feature is not an outlier. That it is represent in a different scale. Okay, तो जैसे अभी सर बोले कि मैग्नीट्यूड वाली बात, एक्चुअली दे आर हैविंग हाई मैग्नीट्यूड. So if I'm going to represent these things 1000 2000, so sir ये point बड़े दूर दूर आएंगे. They are going to come on very very if I'm going to locate these points 1000 2000, तो ये मेरे पास स्केल में बड़े दूर दूर आएंगे. For example, 1000 here, 2000 here, and 1500 here, and the rest of the points which I am having, okay, it is like okay, one or one two something, they are coming less. So they are concentrated in a very close, and these points are concentrated. इनका जो distribution है ये काफी दूर है, high है, हाई डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं इनका जो है. दे आर हैविंग ओके, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो मैग्नीट्यूड बोला अभी सर, दे ही टोल्ड कि मैग्नीट्यूड वाली बात. अब ये इनका और इनका इनका कंसंट्रेशन देखिए, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ लेस हो गया, इनका जो है कंसंट्रेशन हाई हो गया. दे आर लोकेटेड वेरी फार अवे. सो मॉडल को इन सबको कैप्चर करना है इन सबको. Model needs to capture all these things, all the data points, x1 points also, x2 points also, all these capture करना है. तो भाई मॉडल की एफर्ट इनकी तरफ ज्यादा रहेगी, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओके, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वाइड स्केल. ओके, सो स्केल में हमने बोला ओके, वन वन थिंग, वन वन पॉइंट आई टोल्ड कि ठीक है, यू आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स इन अ डेटा दैट आर हैविंग डिफरेंट स्केल्स. अलग अलग स्केल पे उनको रिप्रेजेंट किया. एक आपका मीटर पे था, एक केजी पे था, एक इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. डिफरेंट स्केल्स पे रिप्रेजेंट किया और उनकी अकॉर्डिंग वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है. अब वो उन्हीं से ही तो मुझे वेरियंस निकालना है. स्केल अपनी जगह, बट द कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. तो उन सभी का वेरियंस डिफरेंट होगा, बिकॉज आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम दोज वैल्यूज, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेरियंस. वही होगा, चाहे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड से माइनस करूंगा मैं सब सब मीन को. That will be the variance. All the corresponding variances will be different for them. Okay, so it's quite obvious. Those values, it's quite obvious. उनका जो variance है, okay, वो corresponding होगा, and all the features contribution will not be same. According to the variance, their contribution will be defined. According to the variance, their contribution will be defined. Okay, तो एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज अ जेड स्कोर. इसको जेड स्कोर भी बोलते हैं. दे आर सेइंग कि वैल्यू माइनस मीन divided by the standard deviation. That is called as a z-score. I need to calculate the z-score. Okay, so the variables with high variance will dominate the various. यही मैं बात आपको रिपीट कर रहा था ऊपर, पहले भी मैंने बोल दी थी. The variables with high variance is going to dominate the variables with low variance, resulting in a biased output. क्यों? क्योंकि वो आउटपुट को डेविएट कर देंगे. वो बोलेंगे नहीं, हमारे अनुसार चलो आप. That's what we are saying. You have to perform according to us only. तो standardizations की हेल्प से आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ प्रॉपर स्केल. जैसे 0 से 1 के स्केल में मुझे, यदि मैं आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, ओके, stand divided by the standard deviation, value minus mean. Okay, every value present in my
data in my respective column minus the mean of that particular column divided by the standard deviation of it is said to be the z score. Okay, z वैल्यू बोलेंगे उसे. Okay, and ठीक है, इसी को ही आप स्टैंडर्डाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हो. दैट्स कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन. सो स्टैंडर्डाइजेशन. ओके. यस. एनी डाउट प्लीज? यस रोहित. यस मिस्टर रोहित, आस्क. सर ये मतलब ऑलवेज नेसेसरी है कि कन्वर्ट करना ही है जेड ना स्कोर ना, ये अभी उसके लिए निकालने भी एक स्टैंडर्ड? पॉइंट है, उसके लिए पॉइंट है. ओके, वी डू नॉट हैव टू डू इट ब्लाइंडली. Before blindly doing it, it is important to understand the data is important and what type of model which we are using. ये important है हमारे लिए. Okay, what model you are using and what is the kind of data you are available with, then apply the standardization. Standardization is done when distance based algorithms are being used. अब वो linear regression and all these things ना, वहाँ पर standardization मैंने कई बार use होते हुए देखा. Most of the times I pick the thing standard. क्यों? अच्छा, kind of data in the data also, if you are having the features which are having different scales, if they are represented on different scale and different magnitude of the values, so वहां पर scaling करने का एक option है, बनता है, वहां पर scale करें. And if you scale those values, so now the resulting values will be the standard values which can be represented, which can be represented, all of them can be represented on a standard scale. जब हो जाएगा तो फिर मेरे पास मॉडल में बायसिंग नहीं आएगी, बायस नहीं होगा. अब जैसे ये हाई वैल्यू है, जैसे सर ने अभी जस्ट बोला भी था कुछ देर पहले, सर दीज आर द मैग्नीट्यूड्स. सो एक्चुअली दीज आर हाई मैग्नीट्यूड्स, 1000, 2000, 3000, दीज आर हाई मैग्नीट्यूड डेटा. अब ये क्या मॉडल को बायस बनाएंगे? ओके, दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्केल, हाई मैग्नीट्यूड डेटा, ये बायस कर देंगे मॉडल को, बोलेंगे नहीं भाई, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो आप. ओके, और ये बेचारे ये वैल्यू सप्रेस हो जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई, हमारा तो इतनी क्षमता नहीं है आप तक पहुंचने की. ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू? तो इस यही रीजन है. तो काइंड ऑफ डेटा, different scales if you are having, kind of algorithm which you are using, you need to apply this standardization technique. Okay, that's what you have to do. Yes, you can unmuting and say. Yes, sir. So for tree-based algorithms, standardization is not necessary. That's what would you say? uh, they are saying standardization is done when distance based algorithms are used. Distance based Okay, so algorithms are for used. so yeah, so what I'm saying is, so tree-based are not distance-based. हाँ ना, ट्री बेस आर we नॉट don't डिस्टेंस need बेस. to. ना, वी डोंट हैव टू परफॉर्म द स्टैंडर्ड. वो सर इंटरनल उठा लेगा वो. तो वहां पर Okay, वी thank नॉट you. हैव टू. जैसे ट्री बेस्ड है, ग्राफ जैसे बनता, हम ग्राफ का मतलब एक पोर्शन है ट्री जहाँ में सर्किट नहीं बनता. ओके, सो ट्री बेस्ड, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, तो वहां सर ये इट्स नॉट मीन्स इम्पोर्टेंट देयर. ओके, एंड आउटलायर भी वहां पर रिमूव करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है वहां पर. ओके, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इट्स डिफरेंट एंड दे डू प्लॉट एवरी पॉइंट इन अ डिफरेंट वे, उनकी अप्रोच अलग होती है. सो वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत नहीं है. ओके, बट इन जनरल जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, देयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. All right, and this is the step number 1 of PCA. You have to standardize your data, then only you can apply the PCA. So अभी स्टैंडर्डाइजेशन पर ही इतना इतना डिस्कशन हुआ. ओके, स्टेप नंबर 1 पर ही इतनी बातें हुई हैं, एंड दिस इज द वे यू आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज. ऑलराइट, एंड एवरी लाइन which is written here is a very simple. Okay, and yes, but they are having great importance. Where, when to use, how to use, what should be the data, and what should be the algorithm. Standardization. Step number 2 is covariance. You need to apply the covariance matrix. So as I told, variance important है, covariance means among two features. So computation of covariance matrix will help in understanding how variables are behaving with respect to each other. That is said to be covariance, behavior of features among themselves, covariance. And the covariance matrix is used to calculate eigenvalue and eigenvectors ahead. ये तो है ही, ये तो अभी स्टार मार के चलो आप, ये तो आगे आना ही है. आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, बिकॉज द पॉइंट विच हैज बीन टोल्ड टू यू दैट आई नीड टू प्रोजेक्ट माई डेटा, और आइदर ओवर माई डेटा ओनली आई नीड टू मेक अ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ऐसा करते हैं. यहाँ तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन में एफर्ट लग रहा है, मुझे लग रहा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू इफ आई एम गोइंग टू मेक, सो यू कैन प्रोजेक्ट द इंफॉर्मेशन ओवर इट. कर सकते हैं आप.
All right. So covariance of a matrix, that means finding the relationship between two variables, three variables, whatever. Okay. So what is the way? This is, if you are having x, y, z, three variables or three features, this is how you can write the covariance. This is the way you can write the covariance matrix. Covariance between xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz. ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स बनता है. इफ यू आर हैविंग थ्री फीचर्स, दिस इज द कोवेरियंस मैट्रिक्स. अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस, ये हम आगे पढ़ेंगे. दैट विल स्टडी अहेड. If you are having same features, if you are having same features, then covariance of xx will be equal to the variance of x only. ये variance of x ही होता है, मतलब okay, उसमें आपस में क्या निकल सकता है? Okay, so covariance of xx, covariance of yy, covariance of zz, they all means variance of x, variance of y, variance of z. Okay, so this is your covariance matrix. Step number 2, ये बनानी है हमें. Okay, in PCA. So principal component analysis in general is a dimensionality reduction technique, and we use this PCA in unsupervised actually. Unsupervised learning के अंदर हम use करते हैं. Unsupervised machine learning technique में we are going to use the PCA. वहाँ पर हम use करते हैं. ओके, इसको भी लेकर कंफ्यूजन रहता है सर, वेदर वी आर गोइंग टू यूज इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग और वेदर वी आर गोइंग टू यूज इन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. तो पीसीए इज यूज इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जहां पर कोई टारगेट नहीं होता. सो देयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द पीसीए. ओके, क्योंकि अभी यहाँ टारगेट के साथ कोई रिलेशनशिप वाली बात ही नहीं हुई है. आप ये सोचिए, इन दिस एल्गोरिथम मैंने इन जनरल पहले समझाया कि दोज फीचर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस हुज रिलेशन विद द टारगेट, हु आर हैविंग हाई वेरिएंस, एंड आपस में जिनका कम रिलेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. बट अनसुपरवाइज, अब ये पीसीए में ऐसा कोई हमने थीम लिया ही नहीं जहां टारगेट की बात हो रही हो. हम तो बस वेरिएंस कर रहे हैं फीचर्स का, टारगेट की रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं करी हमने. ओके, तो जहां टारगेट नहीं है, दैट इज अनसुपरवाइज्ड. So PC is used in unsupervised machine learning, where we are totally focused upon the variance of the features. The feature which is having high variance, we are going to keep the low variance features को ऐसे principal component बना के उनको निपटा देंगे, अपन select कर लेंगे. So this is feature selection technique in unsupervised machine learning, PCA, principal component analysis. अभी 2 step का भी discussion हुआ है हमारे साथ, standardization and the covariance. अगला step, okay, obviously you need to apply eigen value and eigen vectors. नेक्स्ट आपका ये एप्लीकेशन है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये आपको अप्लाई करना है. ओके, एंड देन इसको करने के बाद you are going to perform feature vector, and then you need to align the data along the principal components. डेटा को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अबाउट अलाइन करना पड़ेगा. ओके, तो एक बार मुझे वेक्टर्स मिल गए, आई एम गोइंग टू से व्हाट आर द फीचर वेक्टर्स फॉर मी. इनमें से सिलेक्ट कर लूंगा मैं व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स, एंड उन फीचर्स के अबाउट आई एम गोइंग टू अलाइन माय डेटा. दैट्स व्हाट आई नीड टू, दिस इज द कंप्लीट स्टेप फॉर द पीसीए. यस, यस सर, आस्क द क्वेश्चन. Sir, we have that principal component 1, 2, 3, 4. How long we can expand this, and what does it mean? Sir, these are the new dimensions, sir. These are the new axes, sir. Okay, and as much as features you are having, as much as principal components you can have. ये ऊपर लाइन था सर, I already told. ये देखिए, ये रहा. Remember, if we have n features or n columns in the data, we will have n principal components. तो जितना डायमेंशन है सर, उतने कंपोनेंट बन जाएंगे आपके. फॉर एवरी फीचर वन कंपोनेंट कैन यू आर गोइंग टू मेट. अब उस कंपोनेंट पे आप उस रेस्पेक्टिव फीचर को रिप्रेजेंट करोगे, तो सर आपको नाउ देयर विल बी चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, उसका वेरिएंस उसके हिसाब से अफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस. तो ये जो पूरी प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक द एक्सेस, वी आर गोइंग टू डिफाइन न्यू एक्सेस, वी आर गोइंग टू align the data according to those
फीचर वेक्टर्स या फीचर कंपोनेंट्स या प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अलोंग हम अलाइन करने की कोशिश करेंगे. ओके. एंड दोज फीचर्स विच आर हैविंग हाई वेरिएंस वो प्रिजर्व हो जाएंगे, जिनका लो था उनका और लो से लो हो जाएगा, तो उनको हम सर एलिमिनेट कर देंगे. दैट्स व्हाट आवर गोल इज. Sir, it mean यस यस प्लीज से. सर योर वॉइस इज नॉट. यस. I guess there's some issue with the voice. yes, yes, sir. हाँ सर. या. Sir, I'm audible, sir. हाँ हाँ यस प्लीज से. Sir, is it something like how many features are there? You have to take so many number of principal हाँ हाँ components. Say हाँ हाँ 100 are there, then you take 100 हाँ 100 100 principal हाँ 100 components. components. Yes. At max Sir, you can take my 100. next, At max you can take oh, 100. At max you can take minimum oh, also. You can okay, take minimum also. जरूरी नहीं है. उसने बोला कि आपके पास जितने कंपोनेंट्स है उतने जितने फीचर्स है उतने कंपोनेंट्स बना सकते हो आप. एंड यू कैन शो देम ओके अबाउट दिस इतना था, अबाउट दिस इतना था, ऑल यू कैन शो. यू कैन टेक टू ऑल्सो. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ इट आई एम गोइंग टू टेक ओनली टू कंपोनेंट्स. तो दो पे दो की वैल्यू दे देगा वो. टू टू की वैल्यू दे देगा वो. okay, sir. So this will help for visualization हाँ हाँ purpose, sir. विजुअलाइजेशन Again, पर्पस हम विजुअल भी कर लेंगे सर इसका. We can show this in a thank form you, of sir. visuals also, sir. We can take some data, we are going to apply this algorithm, we can show the visuals also. That's what we can So do. is there any mechanism like minimum and maximum to decide? नहीं सर ऐसा रूल्स है ऐसे. इन जनरल उसने बोला एट मैक्स तो नंबर ऑफ फीचर्स के बराबर है, बाकी एज पर योर रिक्वायरमेंट हाउ मच फीचर यू रिक्वायर टू ट्रेन योर डेटा. तो हम बोल रहे हैं टू कंपोनेंट्स चाहिए थे तो टू पे प्रोजेक्ट करो, बाकी को हटा दो. टेक टू फीचर मैक्स एंड ट्रेन योर मॉडल अकॉर्डिंग टू दोज टू फीचर्स. ओके. टू फीचर थ्री फीचर ये है सर रूल है. ओके. तो इससे ऊपर नहीं आना चाहिए. प्रिंसिपल कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फीचर. इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे तो बन भी नहीं सकते. ओके. Okay, sir. तो Thank you, इस sir. हाँ सर थैंक यू सर. तो ये इतना मैक्स इसके बराबर आ जाएगा, बाकी लेस देन भी हो सकता है. इट कैन बी लेस ऑल्सो बट नॉट मोर देन दैट. ये रूल है. एंड दीज आर द स्टेप्स विच यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ जो केस आया है वो वेरिएंस का आया है, उसको समझना. स्टैंडर्डाइजेशन वी नीड टू स्टडी वेयर टू अप्लाई द स्टैंडर्डाइजेशन. Okay, and how to apply the standardization? This is one of the formula for z calculating the z score. ये standardization technique ही है. All right, fine. Okay, here I stop presenting and here I am stop